Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So children, through EVS, we've known about so many different things. So now, since we have learnt about water, we are going to continue further and learn about water cycle in this chapter. Okay? So बच्चों देखते हैं water cycle क्या होती है. Okay? I know ice is a dash form of water. बताओ, ice कौन सा form है पानी का? It's a solid form of water. Okay, ice cubes. Steam is a dash form of water. Steam is what? जो वाफ आती है, that is a gas. Okay, it's a gaseous form of water. Now, children, water exists in three forms: solid, liquid, and gas. So these forms are interchangeable. मतलब let's see how they are interchangeable. Okay, evaporation. Have you ever thought how wet clothes get dried up? How does this happen? Where does the water go? Water turns into vapor. Okay, जो steam होता है हमने किया था वैसे ही पानी vapor में convert हो जाता है. Okay, from its liquid form. Okay, and evaporation occurs from all water bodies and plants. It occurs all the time and at all temperature. तो क्या होता है evaporation में हमारे कपड़े जो होते हैं, आपने कभी सोचा है वो dry up कैसे हो जाते हैं गीले कपड़े? That is because of the evaporation. That's because of the vapor or the moisture in the air or the heat in the air. Okay. So what happens is water exists in the form of a liquid in rivers, ponds, lakes and tap water. Water is present in air and our breath in the form of water vapors, which we cannot see. Let us learn more about it. Now let's look at the different factors that affect the evaporation. First one, speed of wind. Okay, speed of wind मतलब हवा की जो गति होती है, the speed. Okay, that tells us that whether it is really very fast wind or slow wind. जैसे जो slow wind होती है उसको हम लोग कहते हैं breeze. Okay, और fast wind होती है उसको तो wind ही कहते हैं. Alright, now the rate of evaporation increases with the increase in the speed of wind. अगर wind ज़्यादा तेज है तो आप देखोगे कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं. But if the wind is low, okay, and it has some moisture in the air, तो कभी कभी उसको time लगता है. Alright, now let's look at this experiment. Okay, take two bowls of the same size. Pour an equal amount of water in them. Put one bowl under a fan and turn the fan on. Put the other bowl in the kitchen, okay, keeping the fan switched off. Take a look at the bowls after an hour. So what will you see after an hour? दो बोल में आपने पानी भर के रखा है, एक को आपने फैन के नीचे रखा है और दूसरे बोल को आपने किचन में रखा है without fan. So after an hour, you see that there is less water in the bowl placed under the fan. तो फैन के नीचे जो बोल है उसका पानी जो है वो हवा ने खींच लिया है. Okay, this means that more water has evaporated from the bowl placed under the fan. Thus, it proves that water evaporates faster when the speed of wind is high. Alright, now next thing is the temperature. The rate of evaporation increases with the rise in temperature. Okay, तो जितना आपका higher the temperature, okay, higher the rate of evaporation. Take the same amount of water. अब एक experiment करेंगे. Okay, now you have to take the same amount of water into two bowls of the same size and keep one bowl in the sun and the other in the shade. Okay, so after an hour what you will see is that there is less water in the bowl that is kept in the sun. Okay, this shows that more water has evaporated from the bowl placed in the sun. It proves that water evaporates faster when the temperature is high.
तो जब ज़्यादा धूप होती है या गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब हम कपड़े बाहर सुखाने डाल देते फिर लाइक विद इन एन आवर और टू वो सूख जाते हैं. बट ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर इज़ लो, जैसे 15 डिग्रीज हुआ, 12 डिग्रीज हुआ, 20 डिग्रीज हुआ, तो उसमें टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, हवा में ठंडक होती है, उसकी वजह से कपड़ों को सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है. Okay, so this experiment tells you that water evaporates faster, okay, when the temperature is high. All right. Now, third factor is the humidity. हवा में जो moisture होता है उसको कहते हैं humidity. Okay, the rate of evaporation decreases when the humidity increases. Moisture मतलब क्या होता है? They are water particles only. Okay, तो इसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो होती है वो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है उसको डिक्रीज कर देती है. ओके, सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट ड्राई डे देन ऑन अ क्लाउडी डे. डू यू नो व्हाई? ऑन अ ड्राई डे air has the least moisture in it. It can take in more moisture from the clothes. But on a cloudy day, air has more moisture, मतलब हवा में ज़्यादा पानी होता है. There is more of a moisture in the air, okay, which is moisture as in water vapor. Okay, so it can absorb a very little water from wet clothes. All right. So now the fourth factor is the area of the surface exposed. The larger the area exposed to the sun, the higher will be the rate of evaporation. So मतलब अगर आपके कपड़े धूप में डालो एक साइड में और दूसरे साइड पे आप छाँव रखो, छाँव में कपड़े डालो, तो आप देखोगे जो धूप में कपड़े हैं वो ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं as compared to the one that are in the shade. Okay, so now let's take this example. Take two handkerchiefs of the same size and fabric. Fold one handkerchief in half twice. Put this handkerchief on a table and spread the other handkerchief on the table. After some time, you find that the handkerchief that was not folded is dry and the one that is folded is still wet. This proves that water evaporates faster when the exposed surface area is large. Okay? जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आपने एक हैंकी लिया है, गीला वाला हैंकी लिया है, उसको फोल्ड कर दिया है और टेबल पे रखा है, और दूसरे टेबल पे आपने और एक हैंकी लिया है गीला वाला और उसको ओपन करके स्प्रेड आउट करके रखा है. then you'll find the difference कि जो ओपन करके स्प्रेड आउट करके रखा हुआ है वो जल्दी सूख जाता है और जो फोल्ड किया हुआ है वो it takes a longer time to get dry. Alright, so now let's look at the different advantages of evaporation. Evaporation helps to separate salt from the sea water. We cannot drink the sea water, पर क्या होता है, we can utilize the salt that is present in the sea water for our food purposes, okay, for our eating purposes and all. तो देखा आपने कि in spite of sea water not suitable for drinking, it is still useful for us, है ना बच्चों? So evaporation helps to separate salt from the sea water. तो the process, इसका जो process होता है of separation is known as desalination. Okay, so in this process the sea water is left to evaporate and leave behind the salt. So the salt pans are constructed on the seashore and sea water gets blocked in these पैंस. आपने बच्चों को भी फील्ड्स देखे हैं, फील्ड्स में भी ना कोई फील्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक स्क्वायर एरिया होता है या रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसके अंदर दे ग्रो द क्रॉप्स. वैसे ही सॉल्ट पैंस जो होते हैं वहाँ पे भी ऐसे एक स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेशली नियर द सी शो, जहाँ पे वो लोग ये सॉल्ट पैंस कंस्ट्रक्ट करते हैं या बिल्ड करते हैं और उसके अंदर वो सी वाटर को ट्रैप कर देते हैं.
जिसकी वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है, उसका वाटर वेपर बन जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, एंड देन ओके द सी वाटर, बिकॉज इट इज ब्लॉक्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द इवेपोरेशन, द सी वाटर ओके ब्लॉक्ड विद इन द सॉल्ट पैन्स गेट्स heated okay with the sunlight. It takes the natural heat and it gets heated up. Okay, soon the water evaporates and leaves behind the salt. Okay, तो water जैसे evaporate हो जाता है वैसे वैसे वो convert हो जाता है into the form of salt. Okay, the salt is collected and sent to factories where it is refined for further use. तो जैसे हमारा पानी जो हम लोग यूज़ करते हैं, we don't use the water directly from the rivers or lakes or ponds and all. What happens to that water is it goes to the factories, it gets refined, it gets filtered and then we drink that water. वैसे ही ये जो सॉल्ट होता है वो भी फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ पे वो उसको रिफाइन कर देते हैं. ओके सो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आप देखोगे कि देखो जैसे ये डिसैलिनेशन का पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया है. ओशन वाटर आता है ओके फिर उसको हम फिल्टर करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ विद द यूज ऑफ एनर्जी जो हमें सन से मिल रहे हैं, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसैलिनेशन ओके इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इट. ऑलराइट, नाउ चिल्ड्रन आपको फाइंड आउट करना है, इज देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स, रेनी सीजन एंड विंटर्स? सो बच्चों आपने अगर आपके घर में, घर के पास आसपास या आपके विलेज में, आप गांव जाते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि जब आप रेनी सीजन में जाते हो तो रिवर्स में बहुत सारा पानी होता है. ओके जब आप विंटर्स में जाते हो तभी भी वहाँ पे पानी रहता है, बट जब आप समर्स में जाते हो, पीक समर्स में जाते हो, व्हेन द हीट ऑफ द सन इज रियली अ लॉट, ओके तब क्या हो जाता है, तब वो रिवर्स जो होती है वो बन जाती है ड्राई. ओके हैव यू ऑब्जर्व दैट? So if you have observed it, you have to write about it. Alright, चलो अब आगे बढ़ते हैं. Do it yourself. Okay, you too can separate salt from water. Mix salt to a glass of water. Stir well to mix salt completely in water. Now, with the help of an adult, boil the salt water and let it boil till all the water vanishes. A white layer of salt will be left at the bottom of the pan. ओके ये ट्राई करके देखो. एक ग्लास में पानी लो, उसमें सॉल्ट डाल दो. ओके फिर उसको, उस मिक्सचर को स्टर करो. फिर एक बर्तन ले लो, उसके अंदर उस पानी को पोर इट इन दैट वेसल और उसके बाद उसको हीट करो. इतना हीट करो उसको कि बॉईल कर करके उसका पूरा पानी सूख जाएगा. जब वो सूख जाएगा तो आप देखोगे कि उसके नीचे वाले साइड में जो पैन है उसमें नीचे आप देखोगे देयर आर वाइट पार्टिकल्स. दोज आर सॉल्ट पार्टिकल्स. ऑलराइट, सो ट्राई इट. चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज नोन एज द कंडेंसेशन. Okay, now what is condensation? Okay, condensation is the process in which water vapor changes into liquid water on cooling. So it is a reverse process of evaporation. When water vapor cools, okay, it changes into tiny drops of water. So evaporation में कैसे होता है, वो पानी खींच लेता है. अब यहाँ पे ये जब ठंडा हो जाता है तो उसका conversion हो जाता है into water vapor, which is like tiny drops of water. So in nature, the evaporated water goes up, okay, higher into the atmosphere. When it comes in contact with the cold air in the atmosphere, okay, जो water vapor ऊपर जब atmosphere में mix हो जाता है और जब वो cool air के साथ contact में आ जाता है, okay, it changes into what? It changes into small water droplets. Okay, so now जैसे clouds हो गए, dew, fog, frost and snow. ओके ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी है वो सारे कंडेंसेशन के एग्जाम्पल्स है. जैसे लेट्स लुक एट ड्यू. ड्यू कैसे फॉर्म होता है? व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट लाइक ग्रास इन द फील्ड, ड्यू इज फॉर्म्ड.
सो जनरली आप देखोगे सुबह, ओके, सुबह के वक्त जो ग्रास होती है उस पे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं. It's not that somebody's watered those plants. It happens because the water vapor in the air is got mixed up, okay, and then it has left what? It has left small water droplets, okay. Next, snow. When water vapor freezes in air, it forms crystals of ice called snow. Snowfall takes place mainly at hill stations in winter. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर वेपर फ्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द कूल एयर, ओके, वो फ्रीज हो जाता है. जैसे आप देखोगे जनरली जब स्नोफॉल होती है उसके पहले बहुत सारी बारिश हो जाती है, और बारिश होने की वजह से बहुत मतलब स्पेशली इन हिली एरियाज व्हेन इट रेन्स अ लॉट द एयर बिकम्स कोल्डर. और जैसे जैसे ठंड बढ़ जाती है दीज वाटर ड्रॉपलेट्स दे स्टार्ट freezing, और जब वो freeze हो जाते हैं then they start falling, okay, down in the form of snow, alright, in the form of crystals of ice called snow, alright. Now next is fog. During winter water vapor condensates on the dust particles. Dust particles जो होते हैं उसके ऊपर वो water vapor जो होते हैं condense हो जाते हैं in the air to form clouds close to the ground. These clouds are called fog. Okay. Now let's look at the water cycle. Water cycle क्या होती है? Okay. The heat from the sun warms the water in the seas, rivers and lakes. The water changes into water vapor. Since water vapor is lighter, it rises up in the sky where it is cooler. तो सबसे पहले The sun plays a very important role. Sun क्या करता है, वो पानी जो होता है सीज का, रिवर्स का या लेक्स का, उसको it heats up. जैसे जैसे वो पानी हीट अप हो जाता है उसमें से वाटर वेपर निकलते हैं एंड देन दीज वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वहाँ जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वैसे वैसे द क्लाइमेट गेट्स कूलर. ओके, सो व्हेन इट मिक्सेस विद दैट, ओके, द वाटर वेपर चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ water. Now these droplets of water, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये droplets of water क्या हो जाते हैं, they form what? They form clouds, okay, और more tiny drops join in to form larger clouds. तो छोटे छोटे droplets हो जाते हैं तो it forms smaller clouds, और जैसे जैसे बढ़ जाता है the clouds get larger. And when, okay, there is lot of water in it and the clouds become heavy and cannot hold any more water, water falls on the ground as what? Rainfall. So ये सारा जो है it is all a cycle, okay. Sun heats up the water, water goes up in the air, water vapor में हो जाता है convert, water vapor से बन जाते हैं clouds, और जब clouds में और पानी नहीं hold कर सकते, okay, when they can't hold any more water, then that water comes down and gets mixed again in the sea or the rivers or the water or the ponds or the lakes and all. Okay. Now this process is called precipitation. Okay. As it rains, water that had evaporated from the various water bodies, it flows back into water bodies. Okay. Now the sun again heats up this water and it goes up again to form clouds, and thus the water cycle goes on and on in the atmosphere. Alright. So देखो अब diagram में जैसे दिखाया है, it is all the same process, okay. Evaporation, condensation, precipitation and collection. So this cycle continues to happen. Alright. Now remember, water exists in three forms: solid, liquid and gas. Wind, temperature and humidity affect the process of evaporation, and condensation is the process in which water vapor changes into liquid water on cooling. The water cycle goes on and on in the atmosphere. Now children, let's look at the word bank, the new words that we have learnt in this chapter. First one is humidity. That means the amount of water in the air.
Evaporation क्या होता है? It's the process of changing liquid to gas. And condensation, process of changing gas to liquid. Okay, precipitation is the process of falling water from the clouds to the ground in the form of rain or snow. Alright, so children, I hope now you know what the water cycle is and how evaporation, condensation, precipitation, everything plays a very important role in this entire water cycle. So बच्चों अभी जल्दी से reread this chapter and do the back exercises.